नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो? स्वागत करते हैं हम आपका सृजनी के मंच पर, सृजनी के पटल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत 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 खास कार्यक्रम। आप पूछेंगे अर्चना जी ऐसी क्या खासियत है इस कार्यक्रम में? मैं कहूंगी आज हम आपको सेवा की ओर ले चलेंगे। सेवा अर्थात अच्छा कार्य, अच्छी सोच, अच्छी वाइब्स, अच्छी एनर्जी, अच्छा इंटेंशन। एज दे से कि ज़रूरी नहीं हर वक़्त ज़ुबान पर भगवान का नाम आए, लेकिन वो लम्हा भक्ति बन जाता है जब इंसान के काम आए। तो आज सृजनी के साथ आज हम आपको लेके चलेंगे सेवा इन सिखिज़्म। यूँ तो हर धर्म, हर ईमान, हर जज़्बा, हर भावना, हर संप्रदाय आपको सिखाता है, अच्छाई की ओर लेके चलता है। लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी है सिखिज़्म में कि उनका एक बहुत फंडामेंटल कमांडमेंट है सेवा, यानी कि कर सेवा से आता है शब्द सेवा। तो क्या है ये सेवा? आइए जानते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सीखते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने वाकई जिंदगी में इसे इम्प्लीमेंट किया है। तो आइए सेवा इन सिखिज्म लेके चलते हैं आपको सृजनी के मंच पर। कहते हैं जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। हम इंसान हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, मौज करते हैं, मुस्कुराते हैं, गीत गाते हैं, नाचते हैं, लेकिन वो सब तो जानवर भी करते हैं। हर कोई वो करता है जो इंसान कर सकता है। इंसान में ऐसा है क्या जो उसे जानवरों से अलग करता है? आपकी मुस्कुराहट, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, योर इंटेलेक्चुअल पावर, आपकी सोच आपको जानवरों से अलहदा करती है, अलग करती है। तो आइए उस सोच का आज इस्तेमाल करते हैं और सोचें कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमारे परे, बियॉन्ड मी, व्हाट इज दैट आई एम डूइंग दैट इज नॉट सेल्फिश ऑफ मी, नॉट जस्ट फॉर मी, दैट सेवा, दैट इज कर सेवा या पर सेवा। कहते हैं माधव सेवा, ईश्वर की जो भक्ति होती है ना, उससे बढ़कर होती है मानव सेवा। तो आइए उस मानव सेवा में जो हम शिक्षा ले सकते हैं, बेस्ट पार्ट हम अगर सीखें, जो बड़े-बड़े लोग कहे गए हैं, खासकर बानी में, गुरबानी में, क्या है? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दैट? आइए लेट्स इनवाइट आवर सम स्पेशल गेस्ट हू कैन टीच अस व्हाट टू लर्न। वी हैव विद अस टुडे संजीत सिंह डांग सर एंड हिज son Gurnur ji. We have Rose ji with us, welcoming Baljit ji. We also have Kamal ji with us and our very own Amol ji. स्वागत आप सबका, बहुत बहुत आपका नमन है, प्रणाम है, अभिनंदन है, वंदन है। सत श्री अकाल के साथ आपको हम नमस्ते करते हैं और सृजनी के मंच पर स्वागत करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले विल जस्ट हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ईच। तो हम सबसे पूछेंगे कि आप अपने विषय में, अपने बारे में 2 शब्द हमें बताएं। संजीत जी, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। Yes, can you hear me? आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल संजीत जी, यस। Okay. Thank you Archana ji for inviting. मेरा नाम संजीत सिंह डांग है. I'm based in Silicon Valley. I've been here for 20 years, and I'm a venture capitalist by profession, but also a strong believer in Guru Seva, and especially the Sikh. We feel that giving is a big part of who we are and what we should be, we should all be doing. So Gurnur and I will talk about some of the thoughts along those lines. But thank you very much for having me here. Awesome. We look forward for that, sir. And thank you so much for giving us time. Gurnur, would you like to introduce yourself with a few words? Hello everyone, my name is Gurnur Singh Dang. I'm a middle school student in Silicon Valley and I'm excited to talk about Seva in Sikhism. Wonderful. Looking forward to hear from you. Really, Gurnur has done so many wonderful things. When I heard him in a presentation in a big program, I had to invite him, I thought. So thank you so much. So Kamal ji, we would love to hear a few words about you. आप म्यूट पर हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए।
Sorry about that. Sat Sri Akal, everybody. My name is Kamal Aluwalia, and I am in Alamo, California. And I am going to speak with all the other panelists on the subject of Seva. What is Seva in Sikhism, and how do we incorporate in everyday our lives? Thank you. Thank you, Kamalji. Really excited to see and meet and hear from you. Now we have Baljeet ji with us. Baljeet ji, आप अपने विषय में कुछ बताएंगी? सत श्री अकाल। मेरा नाम बलजीत है और मैं बे एरिया में खास करके वॉलनट क्रीक में पिछले 40 साल से रहती हूँ। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि जितनी भी अपने बस में हो उतनी सेवा करनी चाहिए। और इट डजंट हैव टू बी इन एनी वन काइंड, इट कैन बी आप पैसों से सेवा कर सकते हैं, अपने काम से सेवा कर सकते हैं, आप जिस तरह से भी किसी की मदद कर सकें वो करिए। और आज मैं आपको एक शब्द सुनाऊंगी। अवश्य, निश्चय। बलजीत जी, हम बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत हैप्पी हैं आप हमारे साथ जुड़ी हैं आज। तो हम वी लुक फॉरवर्ड टू हियर द शब्द फ्रॉम यू। पक्का बहुत हृदय से एक हुक आ रही है, एक पुकार आ रही है। आपने जिस तरह से कहा तन मन धन से हम जुड़ सकते हैं, जो हमारा व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, हमारे सामर्थ्य, व्हाटएवर इज आवर कैपेबिलिटी, व्हाट वी कैन डू इज व्हाट वी शुड डू। तो स्वागत करते हैं हम रोज जी का, जिनके नाम में ही इतनी खूबसूरती है। सच अ ब्यूटीफुल नेम, रोज जी। We would love to hear a few more words about you. Okay. Hello, everybody. Sat Sri Akal. Welcome to this beautiful panel put together by Archana. Maybe I will also be speaking on some aspects of Seva. And Seva is an essential part of our lives. हम कई बार पहचानते भी नहीं हैं कि हम कर रहे हैं, but we are all involved in small or big way. And जैसे अर्चना ने कहा, that is what separates us from the other beings on this world, other animals, that we can do the seva. And it is such an essential part of Sikhism. It is the intrinsic part of Sikhism. And so we would like to share this with all the people who are viewing today. And I live in Danville. I've just moved to California a few years back from upstate New York. And I'm very glad to be here and get to know lovely people like Baljeet and Kamalji. I don't know Mr. Dung, but now I will do. Thank you, and looking forward to all of you. Thank you, Rose ji. बिल्कुल गुलाब की तरफ आप हैं, fresh and happy and such a positive vibe I get always when I talk to you. Thank you. And here, Amol ji, we have Dr. Amol Racker, who is an oncologist from Arizona. He is, and he's an amazing singer. तो मैं आपका स्वागत करूंगी कि आप हमें 2 शब्द अपने बारे में बताएं, और उसके बाद हम आपके मधुर वाणी में, in your wonderful voice, in a melodious voice, हम आपसे एक गीत सुनना चाहेंगे. So welcoming Dr. Amol to Switch Me platform. Thank you, Dr. Amol, for joining us today. Thank you so much. I appreciate the opportunity. और आपने बहुत ही अच्छा topic choose किया, and the panel is amazing. I can already hear their commitment to seva from the brief introductions that they have given. So I look forward to hearing more. And should I just start off with the shabad? Yes, please. मैं हमारे सारे दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि एक प्रथा होती है, एक दस्तूर है कि अगर हम शब्द गा रहे हैं तो कृपया अपना सर, अपने बालों को ढक लीजिए। हालांकि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये एक मर्यादा है, एक उसूल होता है। तो हम आपका we'll really appreciate and honor all our audience if you can kindly wrap your head and cover your head with any cloth that you have. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारा मान रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा शब्द डॉक्टर अमोल जी की आवाज में। So ये शब्द है गुरु अर्जन देव जी का, and it's a really beautiful and meaningful शब्द, so I hope you all enjoy it. कारण करीम
कृपा कर रहीम, कृपा कर रहीम। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अलाए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अलाए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद। कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद। कोई करे पूजा, कोई करे पूजा, कोई सिर नवाए, कोई सिर नवाए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बाचे भ्रिष्ट, कोई सुरगिंदू, कोई नाव तीरथ, कोई नाम तीरथ, कोई हज जाए, कोई हज जाए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अलाए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभु साहब का तिन पेद जाता, प्रभु साहब का तिन पेद जाता। थैंक यू। हा, आनंद आ गया। इतनी खूबसूरत शुरुआत आपने की है। हम तो मन तो कर रहा है आपसे बस सुनते रहे। नदी की तरह प्रवाहित हैं आप, एकदम उत्फुल्लित मन। एक जैसे कहते हैं कि कॉस्मोस के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ गया। आपने इतना अच्छी तरह से, इतने प्यारी तरीके से, इतने मेलोडियसली आपने शुरुआत की है। एक बार जोरदार तालियां अमोल जी के लिए। थैंक यू। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। हमारे दर्शकगण, हमारे ऑडियंस भी बहुत आपको कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग। वाहिगुरु जी और सुजनी पर आप सबका स्वागत है। लवली शब्द। थैंक यू सो मच फॉर ऑल आवर ऑडियंस फॉर गिविंग अस सच लवली कमेंट्स। तो आइए अब हम और सुनेंगे अमोल जी से बस कुछ ही देर में। हम आगे बढ़ते हैं और कमल जी का को स्वागत करते हैं। तो हम इस श्रृंखला में सुनेंगे, हम पहले अमोल जी से हमने गीत सुना, कमल जी की बात हम सुनेंगे कि क्या है आखिर सेवा, क्यों हम करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए। व्हाट इज इन इट फॉर मी एंड व्हाट इज इट इन फॉर ह्यूमैनिटी एंड द वर्ल्ड। कमल जी के बाद हम बलजीत जी से एक और शब्द सुनेंगे, फिर हम न्योता देंगे हमारे फीचर्ड गेस्ट संजीत जी और गुरनूर जी, उनके साथ हम स्वागत करेंगे रोज जी का भी। तो इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लेट्स मी इनवाइट एंड वेलकम आवर वेरी ओन कमल जी टू द स्टेज। कमल जी आप अनम्यूट कर लीजिए। I've been forgetting. Thank you so much, Archana, and thank you, Anmol ji, for singing a beautiful Shabad for all of us. Seva that we are talking today, it means selfless service.
What is selfless service? Without any expectation. We are born with it as a Sikh. I think whatever we get, we see from a very childhood. Our mothers and fathers and grandparents, they are doing the seva at home. I remember that पेरेंट्स आर टेलिंग घर की सबसे पहले सेवा होती है जो बच्चों की हम करते हैं सो सेल्फलेस वो भी सेवा है जो मॉम करती है बट इट इन्वॉल्व्स एक्टिंग selflessly and helping others in a variety of ways without any reward or any personal gain. Seva is a way of life for so many Sikhs and is a part of their daily routine. Like in the morning when we get up, we make the tea, we serve our children. Sabse pehle we go to Babaji's room and pray and say, thank you God for giving us this new day that we can serve our community, we can serve our humanity. Actually, seva jo hai, is word starts from the Sanskrit word, save. Seva means selfless service. And it started in the Sikh religion from the birth of our first Guru, Guru Nanak Dev Ji, 1469. When he was born, he was very charismatic, and whosoever has seen him, especially his first midwife, Nurse Jyoti, she always said that he is a spiritual child, he has a halo, and he is very, very different. He will be something in the world. उसके बाद मैं 5 साल में मैं ब्रीफली आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट द सेवा का जो है तो ये जब गुरु नानक देव जी व्हेन ही वेंट टू स्कूल एंड ही कुड नॉट द टीचर आस्क्ड हिम द मीनिंग ऑफ ABC उन दिनों में तो उर्दू करते थे गुरमुखी नहीं शुरू हुई थी तब तो इन्होंने पहले उस पंडित से पूछा कि मेरे को पहले इसका ओम का मतलब बताओ क्या है तो ऐसे उन्होंने बातें की तो पंडित जी ने आके पिता कालू को बोला कि ये आपका बच्चा जो है ये तो मेरा भी टीचर है इसको मैं कुछ नहीं सिखा सकता सो फिर उन्होंने आके 1-2 बार और काजी को भी बोला पर गुरु नानक देव जी वाज बियॉन्ड ऑल दिस फाइनली माता पिता कालू जी ने बोला कि मेरे को इनको कुछ सिखाना है सो दैट मैं बड़ा हो रहा है जी एंड ही हैज टू बी ऑन हिज ओन 20 रुपीज दे के उसके एक कंपेनियन जो फ्रेंड था मर्दाना बचपन का उसको साथ भेज के बोला कि आप जाके पट्टी से जाके आप तलवंडी से जाके शहर जाओ जाके इसका सौदा करके आओ जिसको सच्चा सौदा बोलेंगे बाद में एंड इसके बड़े प्रॉफिट लेके आना सो गुरु नानक देव जी इज गोइंग विद मर्दाना टू द सिटी ऑन द वे व्हाट ही सीज इज द group of yogis who were sitting right on one side and they did not look very happy. He approached them, he talked to them, what is the matter with you? You do not look happy. The yogis bole, we do not have any money with us and we are very hungry. So Nanak ji looked at Mardana and said, ये 20 rupees जो है जाके इसकी सारी रसद लेके आओ, ingredient अपने flour लेके आओ, हम इनको खाना बना के खिलाएंगे. तो मर्दाना जी गए जाके अपना पूरे का पूरा इंग्रेडिएंट्स लेके आए आके उन्होंने आग लगाई उसके पास स्टोव के ऊपर पूरा खाना बनाया उसको हम लंगर बोल देंगे और उनको सारे जो भी योगी थे उनको एक साथ में बैठा के सारा खाना खिलाया एंड उनका सारे के सारा उनका ये वाला बिजनेस शुरू हुआ उससे सिक्की में ये जो सेवा भाव है शुरू होती है लंगर की शुरुआत तब से हो रही है एंड दिस हैज बीन गोइंग ऑन through all our 10 gurus and uske baad it is I think you can say that it is in our DNA that seva bhav ka simran and seva two things we always do wherever we are wherever you will see a gurudwara or a temple you will see langar has to be there so this is one of the big principle of Sikhi that wherever we are we have to do the seva of langar and community kitchen will be there. Though it is a very simple kitchen, it is only vegetarian meal is provided there, but with full heart, with full love, and everybody sits together.
what does seva do and what type of seva we can do? I'm just going forward there because the topic is very big and deep. And seva जो है, इसका means, in other words, we can say to worship, to adore, to pay homage through the act of any love act. The जो बाबा जी ने, जो गुरु जी ने लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहब में से, हम उससे लेके करते हैं. एंड दोज द मीनिंग ऑफ सिमरन एंड सेवा साथ में जाते हैं. जब हम प्रिपेयर करते हैं लंगर, उसमें वी ऑलवेज से वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु. दैट मीन्स भगवान विच करता पुरख खलोया ते वाल न विंगा होया. दैट मीन्स गुरु जी आप बीच में बैठ के खाना बनाते हैं. और इसीलिए आप देखेंगे जब भी आप लंगर लेते हो, इतनी मिठास उसमें होती है कि आप बोल लो कि बहुत ही टेस्टी होता है. दैट इज वन ऑफ द रीजन लंगर होता है. And wherever in the world the Sikh community is, you will see Gurudwara everywhere, and 24 hours everyone is invited there to have the langar without asking any question. Everyone is just welcome and they do that. Now what does this do seva? कैसे सेवा कर सकते हो? There are 3 types of seva which are mentioned. So this एक सेवा है तन की सेवा, जो आप फिजिकली जाके क्लीन अप करते हो, किसी को उठाते हो, सीनियर होम में जाके उनकी सेवा करते हो. एंड दूसरी सेवा है मेंटल सेवा, किसी को एनकरेजमेंट करना, किसी के साथ बैठ के बातें करना. दैट इज उसको लाइफ में बहुत प्यार देना. दैट इज मन की सेवा होती है. फिर धन की सेवा, मन तन मन धन, ये 3 चीजें जो है जो सेवा में आती हैं. धन की सेवा है, इफ यू हैव plenty of money and you want to share it with the needy person, that is most welcome and that is very very appreciated. जो भी करने वाले होते हैं वो एक तो गुप्त सेवा करते हैं, नाम भी नहीं लेते, but you will see in the world there are lot of things that has been done under the name of सेवा. एक सेवा जो बहुत सिख ऑर्गेनाइजेशन करती है, वो जहाँ भी कोई डिजास्टर होता है, सुनामी आई है, जैसे कोविड में है, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन देनी होती है, गुरुद्वारों में, इंडिया में बंगला साहिब गुरुद्वारों में उन्होंने 200 बेड्स लगा दिए. एंड विदाउट क्वेश्चनिंग whoever has come, they were providing the services for their health. सबसे बड़ी सेवा जो की इन लोगों ने, सिखों ने, वो थी कोविड में. when we had the dead bodies, people were dying like anything, but there was nobody to pick the bodies up. इन लोगों ने इंडिया में, they had the trucks over there, they will go, they pick up the bodies together, they will come and they will cremate them with the full मर्यादा के साथ करेंगे. This is one of the seva they are doing it, and they will do it wherever there is a disaster. They've been called आके कर लो सेवा. गुरु ग्रंथ साहब में सेवा का बहुत बड़ा भाव लिखा हुआ है. कबीर जी ने उसके दोहे हैं जिसमें के कबीर जी बोलते हैं, मेरा सब कुछ जो भी सेवा करता मैं भगवान का दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दैट इज एवरीथिंग is given by our one creator, जिसको हम इक्यमकार बोलते हैं, निरंकार बोलते हैं. उसमें उन्होंने एक अपना दो है जो मैं आपको 4 लाइनें बोल के सुनाने लगी हूँ. आई थिंक आई रियली लाइक दैट वन. कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा. फिर कहते हैं, जब ये मेरे में मैं जो है सबसे बड़ी चीज है, सेवा मैं को लेके जाती है, क्योंकि मैं जो होम में है, होम में इज ए प्राइड, इसको दूर करती है. तो फिर कबीर जी कहते हैं, मैंने ये किया तो क्या हुआ, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तथ तू. फिर मेरे आम साम सभी जगह पे 4 डायरेक्शंस में सिर्फ एक ही चीज आती है कि भगवान वाहिगुरु तू है जो सारा काम करवा रही है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज बीन गिवन बाय यू. मेरा तो एक सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सेवा करूं, अपनी सेवा ले, सो दैट मेरे पूरी तरह मैं तेरा
जस्टिस कर सकूं। इसके साथ मैं कहती हूँ कम्युनिटी सेंटर में सेवा करती हैं, सीनियर होम में जाके सेवा करती हैं, केयर सेंटर बच्चों की सेवा होती है, और हॉस्पिटल में सबसे बड़ी सेवा जो करते हैं जो एक्सेप्शनली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए पिंगलवाड़ा एक सेवा का घर है जो जहाँ लोग जाके अपने बच्चों को भी छोड़ आते हैं, एंड दे बीन रेज्ड ओवर देयर। उनकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ स्टेट्स में ऑल ओवर इज देयर। एंड सबसे बड़ी बात है सिक्खी में सेवा के लिए अब जो भी कमाते हो उसमें 10% और दसवंड बोलते हैं that you should be helping the other by providing that money to them if you can afford it। नहीं तो कहते प्यार में बोल लो, प्यार में सब कुछ है, मिठ बोल रहा जी तो सज्जन स्वामी मेरा। इसके साथ वो मैं कहती हैं कि गुरुद्वारे की सेवा बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सैंक्शन जहाँ गुरुद्वारे उन्होंने रखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब जी, चौर साहब जलते हैं, जो भी करना है काम उसके साथ एक बात जरूर करनी है। क्या करनी है? वाहिगुरु वाहिगुरु तेरा सब सदका तू मेरे सेवा लगे। हेल्थ बहुत जरूरी है, वो भगवान ही देता है, वाहिगुरु देता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I will come back for the rest of it. I'm going to give a chance to others now. There's a lot to do. Thank you so much and I will see you soon. Thank you ji. Back to you Archana. हाँ जी। Thank you so much, Kamalji. That was so meaningful. I mean, it touched my heart, soul, my mind, my body. I mean, I don't have word to express my gratitude for bringing such lovely wisdom to the program. एक बार तालियां जोरदार कमल जी के लिए। फ्रॉम एलमो से आती हैं वो, और इतनी प्यारी बातें। और सबसे मुझे अच्छी बात लगी, दो बात जो मेरे मन में बस गई है, सिमरन एंड सेवा। मैंने फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम विदाउट, अब बाहर से भी और अंदर से भी, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, द होल वर्ल्ड इज लाइक सिमरन एंड सेवा। और जो आपने बात कही, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। इफ यू हैव दैट फीलिंग कि मैं तो कुछ हूं नहीं, तो आपको ना दुख होगा और ना ही कभी विषाद होगा। दैट जो आपके अंदर जो कभी भी डिप्रेशन या लो भावना आती होगा ही नहीं। इट्स नॉट योर्स, इट्स नॉट यू, इट्स समबडी एल्स डूइंग वाया यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। आप एक मीडिया है, आप एक जरिया भर है। तो अगर आप ऐसी भावना के साथ जीवन जीते हैं तो सोचिए आप कितने डिवाइन, कितना अद्भुत जीवन आपका होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और निवेदन करते हैं अमोल जी से कि एक गीत और हमें सुनाए। इससे पहले कि हम गीत सुने, मैं आपको बता दूं हमारे साथ बहुत सारे श्रोतागण, बहुत सारे ऑडियंस और दर्शक बिन जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया है डॉक्टर श्वेता सिन्हा जी का, जो जुड़ी है आयोवा से। गीता महाजन जी, जिन्हें हम गीता माँ कहते हैं, वो कहते हैं अमोल जी का गीत उन्हें बहुत अच्छा लगा है, वो बे एरिया से जुड़ती हैं। अरविंद सिंह बिसेन जी जुड़ते हैं भारत से, थैंक यू सो मच। शशि वाधी जी कहती हैं ग्रेट। और उनके बाद हमारे पास जुड़ी हैं ईश्वर चांद जी, डॉक्टर श्वेता सिन्हा जी, अरविंद जी, परमीत रंधावा जी को बहुत अच्छा लगा है एंड शी इज प्रेइंग। एंड सुलभा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो बहुत अच्छा खुद गाती हैं, वो उनको गीत बहुत अच्छा लगा है और बातें बहुत अच्छी लगी कंवल जी की। कंवल जी एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, एक्सीलेंट थॉट्स। सो दीपा वासवानी जी कहती हैं वाहिगुरु। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हैं, कमल जी, शशि जी, गीता जी, श्वेता जी, एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। आप हम सब धन्य हैं, वी फील ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कांग्रेगेशन, टू रिमेम्बर कि सेवा क्या है और किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आइए अमोल जी, एक और गीत आपकी आवाज में हमें सुनने की बहुत इच्छा है। वेलकम, वेलकम टू सृजनी। आप अनम्यूट कर लीजिए, क्षमा करें, मैं आई म्यूट एवरीबॉडी सो दैट द स्पीकर स्पीक्स डिस्टिंक्टली। मित्र प्यारे, मित्र प्यारे, हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे। तुद बिन रोग रजाइयां ना ओढ़न, तुद बिन रोग रजाइयां ना ओढ़न,
नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना, मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसायां दा रहना, बिंग कसायां दा सहना, मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे यारड़दा सानू साथर चंगा, यारड़दा सानू साथर चंगा, पट केड़ियां दा रहना, पट केड़ियां दा रहना, मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे मित्र प्यारे। थैंक यू। बहुत सोना, अद्भुत अद्भुत, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी बहुत बहुत। Very nice, very nicely sung as well. Thank you for picking the Mitra Pyare Shabad. Sure. Such a great Shabad. Thank Yeah, you. it is a beautiful khayal by Guru Gobind Singh, and of course, anybody has the chance, they should look up the words and the meanings, and you'll really appreciate it. So I love it very much. So thank you for giving me the chance. आई बिलीव हमारे यहाँ कहते हैं कि प्रसाद का दो दाने भी खा लो ना तो पेट भर जाता है, पूरी होलिस्टिक फीलिंग आती है, यू कैन फील कंप्लीट। वैसे ही प्रसाद के रूप में अगर आप शब्द सुन लें, आपका जीवन, आपका दिन, आपका द होल एनवायरमेंट अराउंड यू गेट्स फ्रेग्रेंस, जैसे खुशबू आ जाती है आपके जीवन में, बहुत अच्छा लगता है। और खासकर वही लोग गा पाते हैं ऐसा मीठा जिनको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यू आर ब्लेस्ड अमोल जी टू बी सिंगिंग सच ब्यूटीफुल शब्द। थैंक यू। एक बार तालियां जोरदार अमोल जी के लिए फॉर दिस ग्रेट शब्द। थैंक यू। बहुत सुंदर। Just add, can I add just 2 lines on the Shabad? बिल्कुल जी। So just maybe to add some context about the Shabad, this is a Shabad, very famous Shabad, and Shabad created by Sikh Guru, 10th Guru, Guru Gobind Singh Ji. He recited this Shabad in the Machiwada jungles when he was separated from everyone. Sikhs used to have fights with Mughals at that time, and he got separated from everyone. But he said, I am separated from other human beings. I'm not separated from the My Guru, God. Wow. my God. So मित्र प्यारे नु, मित्र मेरे प्यारे नु, हाल मुरीदा दा कहना, हाल मेरा हाल. But he's referring to God up there and saying, hey, I am never separated from you, even though I'm away from all my friends and family. थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इट। इट मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल। जब हम कुछ किसी का अर्थ, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका रेफरेंस जान पाते हैं तो उसको बेटर इनकलकेट, बेटर जिसे कहते हैं अंदरूनी भावना के साथ सुन पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। और जिन्होंने आपको एक्सप्लेन किया वो हैं हमारे संजीत सिंह डांग सर जी, जिन्हें अब हम इनवाइट करना चाहेंगे कि वो हम आएं और हमें और बताएं
व्हाट इज सेवा इन सिखिज्म, क्यों हम करते हैं, कैसे करते हैं, और इसका इम्पैक्ट हम पर, ह्यूमैनिटी पर, कम्युनिटी पर किस प्रकार से पड़ता है. संजीत जी, very very welcome to my platform of Sujini. Would love to hear from you. Thank you. Is it okay if Gurnur and I share some slides? Yes, please. Yes, please. Okay, 1 second. 1 second. Let me try. So there's a link on present. उसमें आप click कीजिए, and whatever is the open segment that will show up. Yeah. So let me know if you can see the screen. Yes. Okay, very good. First of all, thank you to Archana ji for putting together this panel and also for thinking about having an event focused on Sikhism and Seva. And my name is Sanjeet. I also have my son Gurnur. He actually put together most of the slides, and we will talk together in tandem about first maybe Seva the concept. And I know some of the topics were discussed, but we'll go maybe a little deeper. And then we'll also talk about Seva in Sikhism specifically. Awesome. So, yeah, very nice. Looking forward to it. Thank you, sir. Thank you, Archana ji. So what is Seva? Seva is, when you give to someone, do you feel you are superior? Do you feel, is it a giving mechanism? It feels like at a surface level, it feels like that it is a giving mechanism, but in fact, it is actually an opportunity to serve. It is a serving mechanism. And if you start going deeper into it, and we as human beings, when we give, we feel that it is a giving mechanism, but the reality is it is actually making me a better human being. And Gurnur, do you want to talk about the concept of Seva? Yeah, so Seva is a way to turn us humans into compassionate beings. It's not a giving mechanism, it's for us. It's not for others. It's a way to make us a better human being. Yeah, and then, and then as Gurnur said, it makes us better human beings. So let's understand a little better, a little deeper into how that happens. And if you start looking at, Gurnur, Ekta, my wife, and we were debating upon these slides and how to portray some of these concepts. But, if you start digging deeper into the attributes of Seva, first of all, who is superior? Is it the giver? Is it the receiver? It feels like that the giver is superior, and we all human beings, fall into that trap, into that thinking. But we are just a medium to give. We are all equal. Nobody is superior. We are all born equal, and even during the giving mechanism, we should actually be feeling that we are equal, not superior. So, and Seva is not just about giving money. Seva is also about sharing skills, sharing knowledge, opening doors. In fact, there is a quote by someone who said, when you give money, you give one-time help, and you should give money also. But in addition to that, it's if you open doors for someone, that's a lifelong impact. Similarly, sharing your skills. Everybody has some skills. Some people can have technical skills. Some people have other skills. Whatever skills you have, think about how can I share these skills with others? How can I spend even 1 hour a week? Teach a child, or pick somebody in the neighborhood right around you. You don't even have to look far in your community. Look in the classroom if you're a student. So sharing skills and knowledge is hugely impactful as well. Then, depth of Seva, you should do Seva with full conviction. Half-baked beliefs do not go far. You can do some things for 1 or 2 times, but then it doesn't stay with you. For a type of Seva to stay with you and to have a full impact inside you, should do it with full conviction.
So seva at a surface level seems like a giving mechanism, but is it a giving mechanism? It's actually not a giving mechanism. It is a receiving mechanism. What do we receive when we give to someone, or when we do seva? We receive happiness, gratification, insight. We receive blessings. So in fact, I am not a giver. I'm just a medium of giving. And in fact, I am the receiver. The other person is not the receiver. I receive much bigger things than what I give. What I'm giving is tiny. So seva is more importantly a receiving mechanism rather than giving. And then how do you do seva? The mode of giving seva is also important. Do you feel at the bottom of the heart while doing seva? Do you do it at a mechanical level? All of those attributes of seva make seva uh, make you a better human being through seva. You even sometimes feel you develop a relationship. There are sometimes homeless people. We see them again and again in our community. How do we help them? When we see them, we feel for them. What do we do for them is the question. Do we understand their needs? Do we understand their reactions, their emotions? Is it really momentary, or does it linger on in my heart? So there are a lot of, those were some of the attributes, but there are a lot more attributes of seva. But those were a few attributes that Gurnur and I put together and wanted to share little 2 cents on seva, the concept. And next Gurnur will talk about seva in Sikhism. And before that, yeah, go ahead. So there are 3 pillars of Sikhism in seva: Naam, japna, Kirit, karna, and one chakhna. So, can you go to the next slide? Baikanatji was known for serving water to wounded soldiers after the Sikhs and Mughals war. Guru Gobind Singh Ji asked him, like, is this true that you're feeding water to the enemy and recovering them to fight them again? He said yes. And I didn't see no Mughal, I didn't see a Sikh. On the battlefield, I only saw a human being. And this is what Sikhism is about. Seva in Sikhism. Yeah, and this is a picture in our local Gurdwara Sahib in San Jose, California. This is a picture with the Gurnur a few years ago. But this is more importantly, the picture signifies what Bhai Kanhaiya ji was doing in the battlefield, serving water to all the wounded soldiers, not just to sick wounded soldiers. Go ahead. And then Guru Gobind Singh Ji has created also the concept of, he calls it Manas ki Jat, Eko Sabhe Eko Pehchanbo. It means recognize the entire human race as one. Let's not divide human race into divisions by caste, creed, religion, color, etc. So everybody is one, and that's a concept that a lot of Sikhs follow. You go to the Sikh Gurdwara, like was talked about earlier, langar, Guru ka langar is a big part of that, a part of every Gurdwara, and they serve everyone, irrespective of whosoever that person is, whatever religion or caste or creed or race the person belongs to, and everybody sits equally on the floor, no matter if you are the prime minister or if you are a CEO or whether you are a beggar. It doesn't matter. Gurnur will talk about Guru Ka Langar as a concept of seva in Sikhism. So this was a common sight of Gurdwaras all worldwide, where there are like tens of people making food for hundreds of people each day. Well, the origins was the
story of Guru Nanak Dev Ji. His father telling him to give him, telling him to spend the 20 rupees that his father gave him to start a business. Guru Nanak Dev Ji took those 20 rupees and bought food for the poor saints and the saints. And when his father asked him why would he give it, and he said, "This is a true business." So here are pictures from 4 a.m. at our local Gurdwara, Fremont. These are people working at 4 a.m. to make food for hundreds of people each day. And this isn't something that happened in one day. This happens every single day. So we just put together pictures and videos showing the concept of Guru Ka Langar in action at our local Gurdwara, but you can see very similar. Um, you can find similar site at any Gurdwara Sahib around you. And the volunteers wake up quite early in the morning. We call it the Amrit Vela, Amrit time, and go to the Gurdwara Sahib every morning to do seva. And you can see elderly people doing it. There are sometimes young people doing it as well. So this is a machine for kneading the flour for making chapatis. And you can see the scale of the langar being prepared here. So you saw turmeric, bottle, and other stuff as well. Okay, so it's also important to talk about how do you inspire youth to do seva. It is we all have talked about, all the panelists have talked about seva, the concept, or how seva is prevalent within Sikhism. But let's also talk about the next generation. It's very easy for us to, we all see kids going around in cars, living in large homes, car leaves right from the garage. And then, we see, whether it is in India or even in the US, you see homeless people looking for food, and people outside US may think it's not a common sight. In the US, it is actually common sight. Even here in Bay Area, Silicon Valley, where we live, you will see such sites as well. So the question is, how do you develop the mindset in your children for seva? Number one is start early. When kids are young, even 2 year old, at an age of 2 year old, you can, even at that tender age, you can start instilling the concept of seva. Take them out, have them serve the needy, take them to the Gurdwara or other temple in your belief, and do something for the community. Then have family dinner conversations on child's mindset, and these conversations slowly, step by step, will help develop the mindset of giving, especially which I should say mindset of seva. And the concept that you want to instill in is, if I have something, it's not mine, it's not all mine. I can use it for I can use some of it for my needs, but it is also meant to be shared. And get the entire family involved: grandparents, parents, children, uncles, aunts, friends, relatives. Get everybody involved. One of the things that I see commonly in Sikhism is families go together on Sunday to the Gurdwara Sahib, and on other days too, but especially on Sunday, help out. And I see elderly ladies cutting onions. I see others serving children, 5-year-olds serving the langar. So you see that concept of seva being imbibed by the entire family.
across generations, then child learns from your actions, because words don't matter when it comes to children. They imbibe from your actions. This is actually a friend, Manjeet Singh, his son Angad. They live in Fremont as well. They made a trip down to Southern California and went to San Diego Gurdwara Sahib during their family vacation trip. And the son was serving Guru Kada Prasad, we call it, to others in attendance. Similarly, we have had our children when we go on vacations, and this is, I'm not trying to showcase my kids, I'm rather trying to showcase examples of, this is my daughter Tarini, Ekta, and we went on vacation to Delhi. Actually, Ekta took them to India for family vacation, and they went to Gurdwara Bangla Sahib. Gurdwara Bangla Sahib is made in the memory of our 8th Guru, also called the child Guru or baby Guru sometimes. But he created the concept of Amrit over there in Gurdwara Bangla Sahib, because that Amrit was used to cure Chechak, the disease that was affecting so many people, lives of so many people. And the king, this place used to be a king's bungalow, and that bungalow got transformed into Gurdwara Bangla Sahib, hence the name Bangla. But anyways, when you go on vacation, find a place outside, take your kid. This is Gurnur and Tarini, our kids, doing Seva, Amrit Seva at Gurdwara Bangla Sahib. This is Gurdwara Bangla Sahib. And then also teaching other kids. Gurnur, you want to talk about this? Okay, so me and my sister started classes to help orphans in India, to teach them how to read and teach them math so they can understand. Then this is also a form of seva. And we also do this for free, especially since many people cannot afford actual classes. Yeah, something that we all should try to embrace is whatever knowledge we have, let's try to spread that knowledge to the young community across the world. And nowadays, with online conferencing tools, you can do that online for free. Spend an hour a week, teach whatever you like to teach, and you will inculcate a spirit of learning in the other child, as well as you will impart so much knowledge to other child. Similarly, we emphasize on writing a lot. We tell kids, whenever I meet young kids, we tell them, go write 1 page a week. I'm not trying to create more homework for kids, but just write a page a week on your thoughts. And you don't even need a publisher nowadays. You can publish on Medium, LinkedIn, etc. Write on concept of seva, write on giving, or write on anything. If you play basketball, write on basketball. Why is it important to me? What does it mean to me? How does it make me a better human being? These are all tools to develop the mindset of the child. It gives self-clarity as well. And learn another language. This is not about Sewa in Sikhism particularly, but it's about child development. Learn an orthogonal language. Learning a language of our culture is very important, but I'm talking of learning another language. Our children, Gurnur and Tarini, have been learning Mandarin, and it gives them that the language becomes a lens into a whole new culture. Learning about what their beliefs are, what they do within their culture. So learning from other cultures is also very important, and language is a medium to do that. Gurnur, you want to talk about some of these slides? Yeah, so these are some little acts of kindness that you can do, which is a small form of seva, but it can make a big difference, like cleaning up after a get together, or like giving ice cream to people like such as gardeners who are working so hard, especially in heat waves at this time. They are working so hard, and little acts of kindness like ice cream can brighten someone's day.
And this is what Seva is about. This is another example of where Sikhs every year at the July 4th parade, they do seva by distributing water bottles to all the attendees in Fremont, California, in Silicon Valley. And somebody made a video about it, so I'm sharing that video. So doing things in your community, helping others outside your religion as well, is an equal seva as well. These are our kids at the July 4th parade this year. I want to give a shout out to Sardarji Paul Singh Bhatia ji. He unfortunately passed away in October this year. This is a picture we took at the July 4th parade in Fremont this year. Every year he would dress up with the American flag turban and come out to do the water seva. We call it the Jal Seva, water seva at the July 4th parade. He was a true seva that we will always be remembered very fondly. Gurnu, you want to talk about chat show? Okay, so another form of seva is to, I mean, it's not really seva, but it's helping like more child development, like next slide. Like just such as like asking others for like a 2-minute interview to help others learn about other people. So this is me interviewing the UC Davis Chancellor Gary May. So in conclusion, what is seva? It's not a giving mechanism. Seva is not just for me, but it's for everyone. It's a way to make us better human beings. Seva can be done at any age possible. Thank you, Archana ji, for giving us the opportunity to talk about concept of seva and share some thoughts also on youth development and on Sikhism and seva, concept of seva in Sikhism. Thank you very much. थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट। तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपकी वजह से मुझे ये आइडिया आया। जब मैंने आपको सुना सेवा इंटरनेशनल के प्रोग्राम में, सो तब मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा आई हैव टू ब्रिंग इट टू द ग्लोबल फ्रंट, एंड इट वाज सो नाइस ऑफ यू टू गिव अस टाइम ऑन दिस सैटरडे मॉर्निंग। आई नो उतना मुश्किल होता है, फिर भी आपका आना, आपकी वजह से ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। सो एक बार जोरदार तालियां संजीत जी के लिए और डबल तालियां गुरनूर के लिए। बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम हम देख पाते हैं कि लोग यूथ को इन्वॉल्व करें। हम देखते हैं बहुत अच्छे स्पीकर्स, लेकिन टू ब्रिंग द नेक्स्ट जेन इनटू द फ्रेम, टू हैव दैट पेशेंस, टू हैव दैट ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग एटीट्यूड इज वेरी रेयर। तो दैट वी सी, एंड खासकर आप नाम भी देखिए, गुरनूर, गुरु का जो नूर होता है, जो तेज है, जो एनलाइटमेंट है, उनके नाम से ही झलकता है। सो ब्यूटिफुली, वेरी वेल डन गुरनूर, वेरी वेल सेड, वेरी वेल प्रेजेंटेड। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग। एक बार मैं आपको दोबारा ताली देना चाहती हूँ गुरनूर जी के लिए। वंडरफुल प्रेजेंटेशन। वो कहते हैं सबकी अपनी अपनी जीवन शैली होती है, किसी की चादर उजली, किसी की मैली होती है, उन पेड़ों को हमें बार बार नहीं सींचना पड़ता जिनकी जड़ धरती में गहरी फैली होती है। ये राजेश जी के शब्द हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि जिनकी जड़ यानी बुनियाद, फाउंडेशन, नींव जो हमारा यूथ है, चिल्ड्रन है, यंग है पीपल, उनको अगर हम मजबूत कर दें तो हमारा भविष्य कभी बुरा हो ही नहीं सकता। और आगे बढ़ते हैं, चलिए अपने कारवां के अगले पड़ाव की ओर। हम बलजीत जी को निमंत्रण देते हैं कि वो आए, अपनी मधुर आवाज में हमें एक शब्द सुनाएं। बलजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अर्चना जी एंड संजीत जी एंड गुरनूर। बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन था आपका। आपने इतने खूबसूरत ख्याल सामने रखे हैं कि हम कुछ नहीं है, ये तो भगवान की मेहरबानी है कि हमें उसने एक मीडियम बनाया है कि हम कुछ कर सकें। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने
ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच। तो आज मैं अपने थर्ड गुरु अमरदास साहब का मैं एक शब्द सुनाऊंगी और उसके मीनिंग्स बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सेवा भाव और गुरु की भक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो सेवा हम अपने मन से करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है, और आपको अपने मन चाहे फल मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर से ईगो चली जाती है। सेवा से इंसान मुक्ति पाता है और वाहिगुरु के साथ जुड़ जाता है। और वाहिगुरु का नाम लेना बहुत मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं कि हर एक चीज के लिए टाइम मिल जाता है, पर वाहिगुरु के नाम के लिए आपको वक्त निकालना पड़ता है और उसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। परंतु गुरु की मेहरबानी के साथ हमें वो भी हासिल हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो गुरु की सेवा करते हैं मैं उन पर कुर्बान जाता हूं। तो आइए सुनिए, ये शब्द है तो मैं गाने की कोशिश करूंगी। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा मन चिंदिया फल पावना, हमें विचों जाए। मन चिंदिया फल पावना, हमें विचों जाए। हमें विचों जाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा बंधन तोड़े मुक्त होवे, सच्चे रह समाए। बंधन तोड़े मुक्त होवे, सच्चे रह समाए। सच्चे रह समाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आए। इस जग में
नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आए, गुरमुख वसै मन आए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा नानक जो गुर सेवै आपना, हों तिल बलिहारे जाओ। नानक जो गुर सेवै आपना, हों तिन बलिहारे जाओ, हों तिन बलिहारे जाओ। सतगुर की सेवा सफल है, जे को कहे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा मन चिंदिया फल पावना, हों मैं विचों जाए। मन चिंदिया फल पावना, हों मैं विचों जाए, हों मैं विचों जाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर को करे चित लाए, जे को करे चित लाए। वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत सुंदर, अद्भुत, अविस्मरणीय। जैसे जैसे कहते हैं एकदम रूह में आपकी आवाज, आपके शब्द गूंजते गूंजते रह जाते हैं। इतना सुंदर आपने गाया। और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग आपको यही कह रहे हैं। ईश्वर चांद जी कहती हैं, बलजीत यू रियली डिवाइन सोल, सच अ ब्लेस्ड मॉर्निंग। किस किस का मैं बताऊं। गीता जी कह रही है थैंक्स बलजीत, ब्यूटीफुली शब्द आपने गाया है। प्राची जी बहुत बहुत खुश हैं। प्राची हमारी सृजनी की आधार स्तंभ है। हम 4 हैं। प्राची इज फ्रॉम कनाडा एंड डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी अभी थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना वो भी जरूर आती। तो वो जर्मनी से जुड़ती हैं। और डॉक्टर श्वेता जी हैं जो आयोवा से जुड़ती हैं। तो ईश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ईश्वर जी कहती हैं आई एम फीलिंग लाइक सिटिंग इन अ गुरुद्वारा। सो आई एम सो ब्लेस्ड। आप लोग इतना इतना अच्छा वाइब लेके आती हैं। एंड बलजीत जी, दीपा जी कहती हैं बहुत सुंदर शब्द बलजीत जी। एंड प्राची कह रही है वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एंड शशि जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लॉट्स टू लर्न फ्रॉम ऑल पीपल। बिल्कुल सच कहा आपने शशि जी, कितनी सारी बातें, हम नई बातें सीख रहे हैं। इवन गुरनूर जो खुद एक स्टूडेंट है, कैन यू बिलीव ही इज ट्रेनिंग एंड ट्यूटरिंग अदर चिल्ड्रन इन इंडिया, sharing his fortune with all others. I'm so blessed to have that good vibe all around me. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम हमारी रोज जी को न्योता देंगे, निमंत्रण देंगे कि वो आए और अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें। रोज जी बहुत बहुत स्वागत एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट विद अस। आई नो समय लग गया आपको इनवाइट करने में,
but I love the smile you have on your face, and thanks for Oh, actually, I was totally mesmerized. इतने wonderful शब्द, इतने प्यार से, इतनी श्रद्धा से इन्हें पढ़े, और शब्द तो एकदम दिल पे जाते हैं. और कमल जी की टॉक और डॉक्टर संजीत सिंह और गुरनूर की प्रेजेंटेशन, इतनी इन डेप्थ इन्होंने काम किया, पुट स्लाइड्स पुट टुगेदर करी, इतने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किए, और हमारी अगली जनरेशन के लिए इट इज सच एन एग्जाम्पल. एंड वो कहते हैं ना कि यू डोंट टीच बाय टीचिंग बट यू टीच बाय एग्जाम्पल. तो इनकी जो लाइफ है, ये जो कर रहे हैं, इनके बच्चों को ऑटोमेटिकली, और यही एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है सेवा का, कि हम शुरू से जो बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, तो वो अपने से ही सीख जाते हैं और अगली जनरेशन के लिए वो एग्जाम्पल हो जाते हैं. तो मैं अब बात थोड़ा करूंगी आफ्टर सो मच इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज सेवा. हम कहते हैं सेवा इज सच ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ सिख रिलीजन. तो कैसे आई, हाउ डिड सेवा कम इनटू बीइंग अ पार्ट, सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिख रिलीजन. तो उसकी आई विल ट्राई टू कवर सम ऑफ दैट, एंड ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू अंडरस्टैंड कि क्यों हम सेवा पे इतना maybe उनका connection कट गया है, but we'll wait for her again. Meanwhile, Can I say quickly something? Meanwhile, sure, please. yeah, I think just the whole concept, back to the Shabad, Sadgur ki seva safal hai. I just wanted to maybe elaborate a little bit on the meaning, and it is when Guru Amar Das Ji is saying Sadgur ki seva safal hai, je ko kare chit laye, meaning that seva is successful, fruitful, and rewarding only if it is done with full mind focused on it and with full devotion. So that's the concept he's trying to portray from the Shabad. And then he's also talking about ke home meaning ego. Home goes away if you are doing seva with full devotion, with full focus. Man chindiya fal pavana, fal you'll get the fruit. Home, which how guy home will leave, or ego will leave you. So that is the concept of seva, and it is not easy for all of us, including me, to imbibe and fully and do it in actions. But that's what we should all strive for. That's the essence of the Shabad. Thank you. Sorry, I think there's some internet issues. I was lost. No problem. No worries. But I managed to log on again. Anyway, so seva ka concept kaise aaya? How did it become such an integral part of the Sikh religion? So it started with the basic concept of equality. Guru Nanak promoted that all human beings are equal. एक नूर से सब जग उपजा, कौन चंगे तो कौन मंदे. सो उस कॉन्सेप्ट की वजह से उन्होंने इक्वालिटी की, सब लोग को इक्वल ट्रीट करने के लिए लंगर की सेवा, एकदम इकट्ठे बैठने की सेवा, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई आपको पूछेगा नहीं कहाँ से आए हो, कौन सी रिलीजन है, किस भगवान को आप प्रे करते हैं. उस कॉन्सेप्ट, उस इक्वालिटी की वजह से उन्होंने सेवा का, कोई अगर आप वहाँ पे जाके सेवा करते हैं तो आप कितने भी बड़े आपकी बिजनेस हो, आप बड़े नोन साइंटिस्ट हो, या आप ऑर्डिनरी स्ट्रीट पर्सन हो, अगर वहाँ जाके सेवा जब करते हैं तो वी आर ऑल इक्वल. एंड दैट सेवा ब्रिंग्स अस ऑल टू द सेम लेवल. Every one of us, when we go there, whether we do safai of the bathroom or we make the roti, और उसी कॉन्सेप्ट पे, सेवा के कॉन्सेप्ट पे, नो वर्क इज लो और हाई. सब काम, जो भी कोई सेवा का काम है, चाहे वो आप झाड़ू दे रहे हैं
तो चाहे आप प्रसाद बना रहे हैं, चाहे बच्चों से वो पानी दे रहे हैं, या गुरुद्वारे के बाहर भी कोई भी आप सेवा कर रहे हैं, दैट इज सेवा। सो सेवा, जैसे कमल जी ने कहा, वो 3 तरह की हो सकती है। इट इज तन मन धन, and she has covered it well, so I won't spend some time. आप लोग कैफे आओगे, I will just cover a few things जो गुरु ग्रंथ साहब ने लिखे हुए हैं. I will just mention briefly, छोटे से हैं. सुख होवे सेवा कमानिया, सुख होवे सेवा कमानिया. When you do सेवा, you get सुख. ये सिर्फ सेवा करने, रिसीव करने वाले को ही नहीं फायदा, सेवा करने वाले को भी फायदा है. यू गेट पीस एंड द कंटेंटमेंट. ये आपके लिए भी उतनी ही सेवा है जितना को रिसीवर कर रहा है. देन देयर इज अ सेकंड सेवा. गुरु ग्रंथ साहब ने तो बहुत जगह सेवा की है. आई हैव जस्ट पिक्ड अप 2 or 3. सेवा कर तो होए नेकामी, तिसको होत प्रापत स्वामी. सेवा करत होए निष्कामी, कि अपने गेन सेवा करो नेकामी, विदाउट एनी गेन, विदाउट एनी डिजायर फॉर बेनिफिट, तो उसको नेकामी. किसको होत प्राप्त स्वामी, किसको, उसको फिर स्वामी प्राप्त होता है, उसको वो कंटेंटमेंट, उसको वो पीस मिलती है जब वो सेवा करते हैं. इसकी वजह से जब कोई भी गुरुद्वारे जाता है तो पहले तो हम जाके वहाँ पे लंगर में सेवा करते हैं. वो क्या कि हम आए हैं, हमको कंटेंट मिले, तो हमारी उसमें अपनी भी उतनी ही फायदा है. when we do this seva, it brings us to a level which makes us realize that we are very insignificant. We are all equal. कोई वहाँ पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, आपने कितना दान दिया, नहीं दिया, कोई पूछने वाला नहीं. It is all equality, but you are there and you are presenting. And on this concept, I would also like to share another part of this, which said कि कर सेवा भज हर हर गुरमत. जब आप सेवा कर रहे हैं, कर सेवा भज हर हर गुरमत, कि उस सेवा के टाइम गुरु का नाम लो. आपके दिमाग इधर उधर in different places. When you say the name of Vaheguru, 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 it connects you to the Almighty. It realizes that you are there for seva and you are actually a part of all this. Satgur ki seva gakhdi, Satgur ki seva gakhdi, सिर दीजिए आप गवाए. Satgur ki seva gakhdi is difficult. It's very difficult. Satgur ki seva gakhdi, दीजिए आप गवाए, सिर दीजिए. अपना सिर ह्यूमिलिटी में बेंड करके उसको कीजिए. So Sikhism की जो सेवा है, spirituality is on the left hand and seva is on the right hand. They go hand in hand. कोई आप सुबह शाम तक पूजा करते रहिए अपने लिए और पाठ करते रहिए. ये नहीं कि जरूरी गुरुद्वारे में, आप चर्च में जाओ, मस्जिद में जाओ, जहां भी जाओ, आप अपने लिए सेवा करेंगे. पर जब तक उसको प्रैक्टिकल यूज में नहीं लाएंगे, put it to seva, community, then you are putting a face to it. You're giving actual deeds. You're carrying out the concept of seva, the concept of Sikhism. So I just wanted to share that some of these. तो वो कहते हैं कि सेवा के साथ आदमी गुरमुख हो जाता है और सेवा बिन मनमुख रहता है. मनमुख सिर्फ अपने ही दुनिया में अपनी ही सेवा के लिए वो मनमुख रहता है, अपने मन की चीज सफाई रहता है. सो सेवा का जो भाव है, इट इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट एंड इसको एक पॉइंट आउट करना चाहिए कि कोई भी सेवा छोटी बड़ी, देयर इज नो छोटी बड़ी, दे आर ऑल सेवा. चाहे आप कहीं किसी आप यू कैन ओनली टॉक टू समबडी, कोई
नर्सिंग होम में है, आप फ़ोन उठा के उनसे बात करिए। आप किसी भी कोई भी दुख में है, they need just somebody to listen to them. That is सेवा. Every concept is सेवा. तो जैसे कमल जी ने बताया during the time of COVID that there was a family, a sick family out of, I think out of New Delhi only. तो उनकी एम्बुलेंस सर्विस थी और उनके ट्रक थे, तो उन्होंने सारे उनके जो मेन थे थ्रू आउट दैट कोविड टाइम, जब कोई लाशें नहीं उठा रहा था, दिस फैमिली, दिस मैन और दिस फैमिली वर गोइंग एंड उनका संस्कार, उनके मूविंग द डेड बॉडीज, नोबडी वांटेड टू टच देम एंड दे वर टेकिंग दोज बॉडीज फॉर देयर रिलीजियस क्रिमेशन, और जहाँ भी उनके they were allowed to take them. Eventually, they did get COVID, but nobody died in that family. Vaiguru was watching over them, and they all survived to continue their good work. And recently, as you know, that Ukraine has been going through so much war, so much devastation. And at that time, there is a restaurant guy who has a Punjabi, a Sikh guy who had a restaurant there. Usne open restaurant kar diya, langar. Anybody could come and have food at his restaurant. This is seva. Seva jo aap apne man se, apne dil se karte hain, that is the seva. And when you do seva, aapke bachche aap hi se seekh jayenge. Children learn what they see, not what you tell them, And as when you do seva, the camaraderie, the friendships that you develop are so genuine that you as a person grow and succeed and feel the contentment that you could not get with any money, any goods, any holidays. The contentment that you receive out of seva is just unmeasurable. So I think we have taken a lot more time than we were allotted, but I just said since everybody had covered quite a bit, so I would just cover how seva came to be such an integral part. कि सेवा करने में सब equality है, And thank you. I'm open to any questions if anybody wants to say. I get a little choked up when I talk about seva. नहीं, यही तो बड़ी बात है रोज जी, जो दिल की बात होती है दिल तक पहुंचती जरूर है, और आपने बहुत मन से कहा, जो भी कहा आपने कहा अपने आपके विचार, तभी हमारे श्रोतागण इतने, our audience was really touched by what you said. Dr. Shweta Sinha, Prachi Randhawa, we have all audience, Ishwar Chandji, Vinita Sharma ji, all appreciating and understanding. So the explanation you gave was very, very heartfelt, and people are really enjoying what you said. Thank you so much for sharing such valuable acumen, insight, and understanding of the subject with all of us. And feel like keeping on. I mean, सुनते रहने का मन कर रहा है, but हमारे पास समय की बंदिश है, and already we are shooting up on our time. But I'll request Kamal ji to come and wrap up this program with her उनके अनमोल वचन सुनकर आज हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे. So कमल जी, एक बार दोबारा पुनः आपका मंच पे स्वागत है. आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. Thank you so much, Archana, and thank you everybody for putting such a big light on this subject, seva. But एक बात जरूर I am going to say that right now, ये सेवा करती क्या है? हम सब सेवा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उसके साथ हम क्यों कर रहे हैं? परमात्मा ने, भगवान ने, वाहिगुरु जी ने, कोई तो उसका जरूर मीनिंग है. जो गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु नानक देव जी ने, सभी ने एक ही कहा, हमारा एक मीनिंग है, अपने मन की मैल को धोना है ना. हमारे अंदर इतना कुछ है कि we want to take that thing out. जब सेवा करते हैं, when we do सेवा, उसके साथ हमारे अंदर का जो काम है वो प्यार में बदल जाता है. हमारे अंदर का जो क्रोध है वो शांति में बदल जाता है. तो हमारे अंदर का जो लोभ है उसके साथ कंटेंटमेंट आ जाती है. एंड
हमारे अंदर का जो अटैचमेंट है वो डिटैच होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हंसी वाहिगुरु दी ओर जाना शुरू कर देते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसकी जगह पे क्या आ जाता है? सत, संतोख, दया, नम्रता, प्यार. एंड हम क्या बोलते हैं? सरबत का भला. नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला. तो मैं जयकारा जरूर बुलाऊंगी. बोले सो निहाल. सत श्री अकाल. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की फतेह. Actually, I would like to say that Archana is doing a great seva Yes. to all the society. We recognize that itna effort lagta hai to put all this together and bring everybody together and to present it, and that is a great seva. Yeah. मैं तो बोलती हूँ, मैं एक जरिया भर हूँ. आप लोग मिले हैं और आपने ही ये इंस्पायर किया है. आप लोग इतना अच्छा अनमोल ज्ञान और वचन और शब्द, न सिर्फ शब्द बट उसकी भावना लेकर आए. आपने निभा रहे हैं वो सब. एंड पीपल शुड नो व्हाट्स हैपनिंग एंड वी शुड फॉलो यू. तो प्लीज आप हमेशा कीप इन टच एंड लेट अस नो. आप अभी संजीत सर ने बहुत ही ब्यूटीफुल लिंक दिया है ऑफ दैट जो आपने बताया. मिस्टर शेंटी जी हैं, संजीत सर जी, उन्होंने वो प्राची ने भी लिखा है, तो उनका लिंक हम लाइव स्ट्रीम में दे देंगे. आप उन्हें देखिए जाकर. इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है. रियली बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे समय में ऐसी सोच रखना, उसे निभा पाना, उसे कर पाना. थैंक यू संजीत जी फॉर शेयरिंग दैट. एंड ऑल्सो प्राची, थैंक यू फॉर शेयरिंग अबाउट दैट इंफॉर्मेशन. तो वैसे वक्त वो कहते हैं सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है. जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं है. मेरी इच्छा है कि मैं और सुनूं और जानूं और मैं और ज्ञान प्राप्त करूं, लेकिन समय के हिसाब से हम सबको रुकना पड़ता है. तो टिल वी मीट अगेन, हम हमारे मंच की ओर से आप सबको, हमारे श्रोतागण, दर्शक वृंद, ऑडियंस, भाई बहनों, बंधुगण, सबको बहुत ढेर सारा प्यार, नमस्कार, अभिनंदन, वंदन. आप हमारे साथ जुड़े. इंडिया में बहुत रात हो गई है, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े थे. इतनी अच्छी बात है कि आपने हमारा साथ दिया. इसी प्रकार से जी के साथ रहिए. प्रोग्राम्स फॉर यू अगेन नेक्स्ट वीकेंड. थैंक यू सो मच. एक दुआ के साथ कि आंख कभी भी कोई गम से खारी ना हो, आस किसी की हालातों की मारी ना हो. दुआ हमारी मौला तुमसे बस इतनी है, दुश्मन के घर भी कोई बीमारी ना हो. सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें. अगर आप कोई एक बात कहना चाहते हो, आप में से कोई भी, बिफोर वी से बाय बाय, आदियोस, नमस्कार, प्रणाम, आप अगर कोई संदेश देना चाहें हमारे ऑडियंस को, यू आर मोर देन वेलकम. एनीबडी फ्रॉम यू प्लीज. थैंक यू सो मच. यू डिड अ वंडरफुल जॉब एंड सब लोगों ने मिलकर इतना अच्छा किया, बहुत ही अच्छा लगा. और आई थिंक हम सभी लोग अपने तरीके से जैसे भी हो सकता है कुछ ना कुछ तो करते हैं, सेवा तो करना, ये हमारा उद्देश्य है. थैंक यू सो मच. बहुत सुंदर. संजीत जी आप कुछ कह रहे थे? जी. From Gurnur and my standpoint, thank you very much for having us here. We also learned from other speakers. So thank you very much for putting this together. That is a true seva, as Rose ji said as well. You are doing an awesome seva. Thank you very much, Archana. Thank you, Archana. You are a big blessing to all of us. थैंक यू कमल जी. मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, जो आपने कहा, जो आपकी बोली थी सर्वत दा भला, वो एक बार पुनः कहें और हम उसके साथ ही कार्यक्रम का समापन करेंगे. नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला. That means goodness, and वाहिगुरु मेहर करे whole humanity be good and his shower his blessings on all of us. बोले सो निहाल. सत श्री अकाल. बाय. सत श्री अकाल जी.